Hello everyone, welcome all to my YouTube channel. And in this video, we'll discuss about the previous year question of a CUET PG. And obviously, this is going to be a series. This is our first video. So let's see what are the question. So here is our first question. Here we can see that for the differential equation, हमारे पास एक differential equation given है, which is 1 plus d square y by dx square whole to the power 2 by 3 is equal to y d square y by dx square. यह डिफरेंशियल इक्वेशन हमें निकालनी है द ऑर्डर डिग्री एंड द लिनियरिटी रेस्पेक्टिवली। तो हमें चेक करना है इसका ऑर्डर क्या है, इसका डिग्री क्या होगा और ये लीनियर है नॉन लीनियर है एंड वॉट एवर इट इज। तो जो इक्वेशन गिवन है वो है 1 प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 2 बाई 3 इज इक्वल टू वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। हमें पता है कि डिग्री कभी भी 2 बाई 3 1 बाई 3 9 बाई 5 ऐसे नंबर्स नहीं होते, होते हैं तो इंटीजर्स होते हैं। तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे पावर में मल्टीप्लाई 3 करना है बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 2 बाई 3 इंटू 3 इज इक्वल टू वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3। एंड सो the final result is here you can see. So from here we can clearly see that d square y by dx square, d square y by dx square. So this is a second order differential equation, right? So here the order will be two, option B or C. Then the degree, the highest power of the second order differential equation here is 3. Here it is 2, here it is 3. So obviously 3. And so the degree is 3. So here again it can be B or C. Then here we can see that here y cube is multiplied with d square y by dx square whole cube. Okay. And because these are multiplied together and both raised powers greater than 1, so this can't be linear. So this is a non-linear differential equation. And so the option B, which it says that order is 2, degree is 3, and non-linear is the right answer. Then here, the second question. So a conducting sphere of radius r carries a total charge q. The electric field at distance r greater than r from the center is. तो हमें पूछा गया है electric field at distance r greater than r where is this capital R is represent the radius. This means outside the sphere. एंड हमारे पास एक कॉन्डक्टिंग स्फीयर है ये जिसका रेडियस है r, यहाँ पे चार्ज है q, so obviously inside the charge is 0 because it is a conducting sphere and all the charge are accumulated on the surface only, but we have to find out the electric field at outside. So applying Gauss law, we can use E dot ds equals q by epsilon naught, and so E dot 4 pi r square is equal to q by epsilon naught, and here E will be equal to q by 4 pi r square epsilon naught, which is equal to q by 4 pi r epsilon naught r square, and 1 by 4 pi epsilon naught can be written as k, so kq by r square. The option A is the right answer. Again, one thing we should remember that inside a conducting sphere, the electric field is always zero as the charge enclosed is zero. There. A particle of mass m is in an infinite square potential of length L. The wave function is superposed state of first two energy eigen state given by, हमारे पास एक पार्टिकल है मास जो कि इनफाइनाइट स्क्वायरल पोटेंशियल पे जिसका लेंथ है L, और यहाँ पे जो वेव फंक्शन है वो दो स्टेट को लेके इससे सुपरपोज हुआ है, एक है ग्राउंड स्टेट, एक है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एज हियर n इक्वल्स 1 एंड n इक्वल्स 2, और ये है हमारा टोटल वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल। और हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है और गलत है वो हमें चेक करना है। सो लेट्स सी, as we can see in the question, here is our wave function. तो हम जब भी कोई वेव फंक्शन वाली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट चीज होती है कि हमें चेक करना होता है कि इज इट नॉर्मलाइज्ड और नॉट। तो हम जब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन चेक कर रहे हैं तो फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं p1 c1 स्क्वायर इक्वल्स 1 बाई 3, p2 c2 स्क्वायर इक्वल्स 2 बाई 3, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर।
If we add this, will be equal to 1. That means wave function is normalized. अब हमें आगे कुछ नहीं करना है, जैसा है wave function वैसे ही रखना है और बाकी चीजें सॉल्व करते हुए जानी है. Then, energy eigenvalue, we all know that for square wave potential, En equals n square pi square h bar square by 2ml square. And here it is 1D as only x. So n square pi square h bar square by 2ml square. And h bar, we can write it as h by 2 pi. So by putting the value h bar equals h by 2 pi, we can get this result, that is n square h square by 8 ml square. So the expectation value of energy will be P1 E1 plus P2 E2. Here P1 is 1 by 3 from here we can get, and P2 is 2 by 3. We can see here. Then E1 we can find out from this, and E2 from this. So by putting the value of n equals 1 in E1 and E2 as 2, so the expectation value of energy will be equal to 3h square by 8 ml square. Then again, expectation value of E is equal to expectation value of P square by 2m. This is the kinetic energy P square by 2m. So from here we can get the expectation value of P square is equal to 3h square by 4l square. हमें निकालनी है expectation value of P. तो यहाँ पे हमें निकालनी है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी. तो वो कैसे निकलेगा? वो होता है जैसे साई स्टार, जो भी हमें गिवन है ऑपरेटर एक्स पी ई जो भी इंटू साई, और उसका होल इंटीग्रेशन होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें पी की निकालनी है, तो फिर ये हो जाएगा साई स्टार. क्योंकि ये रियल वेव फंक्शन है तो यहाँ पे आयोटा माइनस आयोटा का कोई सीन नहीं है. देन माइनस आयोटा एच बार डी बाई डी एक्स फॉर पी एंड दिस इज साइन. तो जब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू 0. उसके बाद हमें निकालने हैं डेल्टा पी. डेल्टा पी इज इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी. तो यहाँ से निकलेगा रूट 3h बाय 12. फिर हमें निकालनी है डेल्टा एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू. तो हमें पता है कंसर्वेटिव प्रिंसिपल से डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स एक्स स्क्वायर बाय 2. तो हमें पता है डेल्टा पी इज नॉट इक्वल्स 0, और क्योंकि ये या तो ग्रेटर या तो इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 होनी चाहिए, दैट मीन्स डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल्स 0. And the next question. In the steady state of temperature, the flow of heat across the body depends upon what? And here are four options: thermal capacity, conductivity, temperature difference, and thermal resistivity. We know the formula. Q by T is equal to Ka T1 minus T2 by L. Here K represents the thermal conductivity, A is the area of cross section, and the T1 minus T2 is the temperature difference, where L is the thickness of the body. Okay, so from here we can clearly see that uh, this is proportional to K, proportional to T1 minus T2. That means the conductivity and temperature difference. Again, we know that K is inversely proportional to resistivity. That means somehow this is proportional to thermal resistivity. So here the steady temperature state of temperature, the flow of heat across the body depends upon its thermal conductivity, temperature difference across its opposite phases, and thermal resistivity. That is B, C, and D. So option D is the right answer. Then next question. In Compton scattering, Compton shift equals Compton wavelength if angle of scattering is. तो क्या हो रहा है? Compton scattering हो रही है जहाँ पे Compton shift डेल्टा लैम्बडा इज इक्वल टू Compton wavelength लैम्बडा सी. हमें पता है डेल्टा लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा सी 1 माइनस कॉस थीटा. ये होती है फॉर्मूला. तो यहाँ से डेल्टा लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. तो जब हम यहाँ पे ये पुट कर रहे हैं तो फिर ये हो जा रहा है 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, एंड सो कॉस थीटा इक्वल्स 0. और जब हम यहाँ से थीटा निकाल रहे हैं तो थीटा इक्वल्स कॉस इनवर्स 0, दैट इज इक्वल टू
pi by 2. So here option C is the right answer. Then the electric field just outside a charged conductor is A. The electric field just inside the conductor is, as we know that electric field inside a conductor is always zero as charge enclosed is zero. So your option D equals to zero is the right answer. Then inside a uniformly charged spherical cell, the value of electric field at distance r from the center is. क्या बोल रहा है inside a uniformly charged spherical cell है. The value of electric field at distance r from the center. R at distance r from the center क्या होगा इसका electric field. Inside a uniformly charged spherical cell, the value of the electric field is always zero. So the Q enclosed is zero and hence E equals zero. Then we match 1 and 2. Here are the expressions. Here is the value. So iota to the power 49, iota to the power 38, and so on. We know that iota to the power 1 is equal to iota, obviously. Iota square equals minus 1. Iota to the power 3 equals minus iota. Iota to the power 4 equals 1. And from this, we can get it as iota to the power 4n equals 1. Iota to the power 4n plus 1 equals iota. Iota to the power 4n plus 2 equals minus 1. Iota to the power 4n plus 3 equals minus iota. तो हम कंपेयर करेंगे इसको इन 4n plus 1, 4n plus 2, 4n plus 3 क्या होने वाला है. ठीक है. And here n is the integer. So iota to the power 49 can be written as iota to the power 4 into 12 equals 48 plus 1 is equal to iota to the power 4n plus 1 is equal to iota. Iota to the power 38 equals iota to the power 4 into 9, 36 plus 2. That is iota to the power 4n plus 2, that is equal to minus 1. Then 103 can be written as 4 into 25 plus 3, and so 4n plus 3 and equals minus iota. And 92 can be written as 4 into 23, and so iota to the power 4n equals 1. So it will match these values, that is 49 equals iota, 38 equals minus 1, 103 equals minus iota, 92 equals 1. So the option C is the right answer. Here some radioactive decays are given, and here the reason for stability. Alpha decay always happen for higher Z particle, and so option, not option, but yeah, the third part, nucleus is mostly heavier than PV, that is Z equals 82. Then बीटा नेगेटिव में क्या होता है, Z से होता है Z plus 1. So neutron से proton, that means nucleus has too many neutrons related to the number of protons. Then gamma decay जब energy state पे क्या होता है, डिकेज होती है टू एनर्जी स्टेट पे, तो वो होता है न्यूक्लियस एक्सेस एनर्जी इन एक्साइटेड स्टेट. देन पॉजिट्रॉन एमिशन, यहाँ पर होता है प्रोटॉन का एमिशन. सो ऑब्वियसली न्यूक्लियस, नॉट प्रोटॉन बट या पॉजिट्रॉन, न्यूक्लियस हैज टू मेनी प्रोटॉन्स रिलेटेड टू the number of neutrons. So here the option D. Then the gravitational field at a point in space is, and the gravitational field at a point in space is, this is G is equal to the field intensity, or gravitational field intensity is equal to F by m, which is gravitational force per unit mass. And so option A. Then the de Broglie wavelength of an electron moving with a velocity of 10 to the power 7 meter per second is. हमें निकालनी है de Broglie wavelength किसकी, इलेक्ट्रॉन की. That means we know the n, velocity given at 10 to the power 7 meter per second. We know that the formula is lambda equals h by p. Here p is the momentum and can be written as mv. So h by mv. H we know the value, m for electron we know,
velocity is given 10 to the power 7. So by putting all this value here, we can get the value of de Broglie wavelength lambda is equal to 0.728 into 10 to the power minus 10, which can be written as 7.3 into 10 to the power minus 11 meter, which is option A. Then arrange the following crystal structure in ascending order of their coordination number. हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर है like diamond, sodium chloride, cesium chloride, zinc with a hexagonal closed pack structure that means HCP. तो हमें यहाँ पे इनका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालनी है और उसके बाद उसको एसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. सो लेट्स से ये है हमारे पास डायमंड स्ट्रक्चर. यहाँ पे you can clearly see that the coordination number is 4. Here the coordination number is if we know that this red part is Na plus and the blue part is Cl minus. So you can see that the red part is covered with 1, 2, 3, 4, 5, and 6 Cl minus. So the coordination number is 6. Here for CSCl, the coordination number is 8, clearly visible. This corner 8. And for HCP, the coordination number is 12. And so the ascending order of their coordination number is 4 is less than 6, less than 8, less than 12. So we can arrange it like that. Then again, one more match the list 1 to 2 with 2. So here the logic gates are given, here the expressions we use usually. So for X, we all know that AB bar plus A bar B. For NAND, that means AND plus NOT, and it is AB bar. For OR, this is A plus B, and for XNOR, this is A bar B bar plus AB. So here option B is the right answer. The next question. Brilliance shown is Wigner-Smith cell of reciprocal lattice? Yes. Primitive unit cell for reciprocal lattice? Yes. The locus of all k values in the reciprocal lattice which are reflected? Yes. Wigner-Smith cell of direct lattice? No. क्योंकि ये reciprocal का है तो not direct lattice. So here option A, B, and C are the correct answer. So I hope you all enjoyed this session. So yeah, for the next video, please do like, share, and subscribe. Thank you.